लक्ष्मी लोचना वेती दे तो बा तो प्रॉब्लम दे कटी कटी आज के बाल भजन संध्या कार्यक्रम में आर्य समाज आर्यवीर वीरांगनदल अजमेर राजस्थान जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से आप सबका स्वागत है। इनके बाल भजन संध्या कार्यक्रमத்தில் आर्य समाज आर्यवीर वीरांगनदल अजमेर राजस्थान जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु சார்பாக எல்லாருக்குமே வணக்கம்। இன்றைய முதல் நிகழ்ச்சி फर्स्टली पहले हम 3 बार गायत्री महामंत्र का जाप बोलेंगे। जिन जिनको गाने का है वो अपना माइक अनम्यूट करके गा सकते हैं। எல்லாரோட वीडियो प्लीज switch on if possible. We would like to see the enthusiasm and energy on your face also. இப்போ गायत्री महामंत्र जाप எல்லாரும் பாடலாம், எல்லாரும் रिसाइट பண்ணலாம்। जिस जिनको गायत्री मंत्र बोलने का बोल सकते हैं, हम आके परमात्मा से बुद्धि मांग रहे हैं कि सही मार्ग पे हमारी जिंदगी चल पाए। கடவுள் கிட்ட அறிவு கேட்கிறோம், நல்ல மார்க்கத்தில் நம்ம லைஃப் நம்ம வாழ்க்கை நடக்கணும்। आंख बंद करके पूरा ध्यान उस परमात्मा में और रीढ़ की हड्डी बैकबोन परपेंडिकुलर 90 degrees to the ground and people are sitting in the chair, please take rest on the chair, try to push your backbone erect, eyes closed, chant the mantra Om Bhurvasva तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। May, this Sunday, historic event is taking place. We'll start with a bit of a general knowledge question. 28th May, don't kindly answer out of turn. खाली आप raise your hand, आप अपना हाथ उठाइए, and the केल्विक बदल you can give after you raise your hand. Okay, निदर्शना सबको 28 28 में से इतवार को कौन सी घटना घटने वाली है?
और इसी दिन पे किसका जन्म हुआ था? 28 நவம்பர் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சி நம்ம நாட்டோட வரலாறு ஹிஸ்டரியில நடக்க போறது. அண்ட் 28th மே அன்னைக்கு எனக்கு வருஷம், ஐ டோன்ட் நோ த இயர், வருஷம் தெரியல, ஆனா 28th மே happens to be a birthday of a very great Hindu samrat, a leader who fought for our independence. Somebody, see, we all should keep in touch with what is happening in our country. You understood? 10-15 minutes before you go to bed, read the newspaper, right? We should not be only good at studies, we should be good at everything. Or anybody can say on 28th May what is the whose birthday and what is going to happen? Nobody? Asanuma yarma yare nidarshanawa ஒரு நிமிஷம் யாருமா? Don't know, sir. I don't know. You don't know. 28th May happens to be the birthday of Veer Savarkar, the Hindu samrat, the leader who fought for the rights of Indian people beyond religion, who never agreed with the idea of Mahatma Gandhi that you can win war against Britishers with non-violence. And it is, believe me, it's my personal opinion, we never won it because of non-violence. What is taught to us in school is not correct. But then, this is not the time for discussing such a topic, but respects to this great leader, Veer Savarkar, whose birthday falls on 28th May. Note panniyama nidarshana, Veer Savarkar. அம்மாவோட மொபைல்ல ஹலோ பேசாதீங்கம்மா, பேசாதீங்க. And mobile, everybody go and find out about this leader's life, the trouble he took. Okay, 28th May is a day when our great Prime Minister of our country, Sri Narendra Modi ji, is going to inaugurate the new Parliament of India, where all our elected representatives will sit and decide what is good for the country. So 28th May, 12 noon, while watch the live relay of Modi ji inaugurating our Parliament, and on that day the Sengol is going to be given to him by the Hindu priest, which was given to our first Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru ji by the Britishers when they were transferring power, and Sengol is supposed to be given from one king to another in the Chola dynasty. So watch that beautiful 12 noon live relay. Okay, now who will sing the first bhajan? Hitesh ji, bhajan gaoge? जी गाऊंगा। शुरू कीजिए जी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का छाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहे, आज रूठे तो
कल फिर मने, आज बिगड़े तो कल फिर बने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। धन्यवाद। वेरी गुड, सुंदर सा भजन। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। मैं एक 6 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा तो हितेश जी आपने भजन गाया ना, उसे बहुत मिलता जुलता है। बस मस्त पिक्चर है, वीडियो क्लिप है 6.5 मिनट की, मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद, बहुत मजा आएगा। वेरी ब्यूटिफुली। तो नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे बिंदिया जी को कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। निदर्शन वीडियो ऑन पन्नुमा एंगे இருக்க? Yes, you switch on your audio. On. Acha. Namaste. This is Namaste. one of the bhajans of Sudhanshu Maharaj ji. Namaste. Very good. जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है, अमर ये दीप है कभी न बुझती ये ज्योति है, इसी ज्योति के संग में सदा जीवन जलाओ तुम, सदा जीवन जलाओ तुम। सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आया है, जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आया है, कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल होता है, कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल होता है, इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। कत एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना, करके एकाग्र मन को तुम जरा सत्संग को सुनना, होके डल मन से सुनहरे फूलों को चुनना, इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग, चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग, बिना प्रभु की कृपा नहीं
कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग, बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, सदा सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। वेरी गुड। पूज्य गुरु महाराज जी की जय हो। अब हम एक निदर्शन उनके कुछ चांस போயிடாத புரியுதா? जैसे हितेश जी ने कहा था, सुनारला, he was telling that sukh or dukh are two sides of the same life. That's about a 6.5 movie video which I'm going to show now. How many of you want to be happy in life? சந்தோஷமா இருக்கணும் நிதர்சனம் உனக்கு எப்பவுமே லைஃப்ல? ஆமாவா? எங்க கிளாஸ்ல இருக்கியா? நோ சார், இப்பதான் சார் வீட்டுக்கு. அப்ப வீடியோ ஆன் பண்ணுப்பா. ஒரே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு வீடியோ ஆன் பண்ணி கேளு. ரொம்ப ஜம்முன்னு இருக்கோ, நல்லா கத்துக்குவேன். இல்ல சார், ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறிட்டு இருக்கேன் சார். சரி, வந்த உடனே நீ உட்கார்ந்துட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு நீ கேளு, பாரு, முகம் கூட பார்க்கணும். ஓகே sir. Lakshmi Lochana also waiting. Very good. No, she is not going to sing today, but she is on the program today. Oh. Yeah. So how many of us want to be happy in life? Are requested to watch this very beautiful movie. Of course, very difficult to practice, but we have to practice and try to practice if we want to be happy. If we want to be unhappy, then don't try to practice. The option is yours. Excellent movie. It's a video clip. Sorry, not movie, video clipping. Advise me. Tell me, is there any mantra? All the wise men were puzzled by the king's question. They thought and thought. After a lengthy discussion, an old wise man suggested something which appealed to all of them. They went to the king and gave him something written on a paper, with the condition that the king was not to see it out of curiosity, only in extreme danger. When the king finds himself alone and there seems to be no way, only then he can see it. The king put the paper under his diamond ring. Some time later, the neighbor's king attacked his kingdom. King and his army fought bravely but lost the battle. The king had to flee on his horse. The enemies were following him, getting closer and closer. Suddenly, the king found himself standing at the end of the road. That road was not going anywhere. Underneath there was a rocky valley, 1,000 feet deep. If he jumped into it, he would be finished. And he could not return because it was a small road. The sound of enemies' horses was approaching fast. The king became restless. There seemed to be no way. Then suddenly, he saw the diamond in his ring shining in the sun, and he remembered the message hidden in the ring. He opened the diamond ring and read the message. The message was, "This too shall pass." The king read it and again read it. Suddenly, something struck him. Yes, this too shall pass, he said to himself. Only a few days ago,
I was enjoying my kingdom. I was the mightiest of all the kings. Yet today, the kingdom and all my pleasures have gone. I am here, trying to escape from enemies. Like those days of luxuries have gone, this day of danger too will pass. And a calmness came on his face. He kept standing there. The place where he was standing was full of natural beauty. He had never known that such a beautiful place was also a part of his kingdom. The revelation of the message had a great effect on him. He relaxed and forgot about those following him. After a few minutes, he realized that the noise of the horses and the enemies coming was receding. They moved into some other part of the mountain and were nowhere near him. The king was very brave. He reorganized his army and fought again. He defeated the enemy and regained his empire. When he returned to the empire after victory, he was received with much fanfare. The whole capital was rejoicing in the victory. Everyone was in a festive mood. Flowers on king from every house, from every corner. For a moment, king said to himself, I am one of the bravest and greatest kings. It is not easy to defeat me. With all the reception and celebration, he saw an ego emerging in him. Suddenly, the diamond of his ring flashed in the sunlight and reminded him of the message. He opened it and read it again. There was written, this too shall pass. He became silent. His face went through a total change. From the egoist, he moved to a state of utter humbleness. He thought that if this too shall pass, then it is not yours. The defeat was not yours. The victory is not yours. You are just a watcher. Everything passes by. We are witness of all this. We are the perceivers. Life comes and goes. Happiness comes and goes. Sorrow comes and goes. All these moments will pass away. Therefore, I should not get attached with all this. If we see in our lives and silently evaluate it, we will find that this too shall pass. Think of the moments of joy and victory in your life. Think of the moments of sorrow and defeat. Are they permanent? No. They all come and pass away. Life just passes away. There is nothing permanent in this world. Everything changes except the law of change. Think over it from your own perspective. You have seen all the changes. You have survived all setbacks, all defeats, and all sorrows. All have passed away. The problems in the present, they too will pass away. Because nothing remains forever. Joy and sorrow are the two faces of the same coin. They both will pass away. You are just a witness to change. Experience it, understand it, and whenever you are going through difficult time in your life, always remember that this too shall pass. Wasn't it a beautiful video clipping? Somebody exchange thoughts. Nidashana Pathiyama video la enna paathen? Sir, shilla patti Enna? ஒரு கிள்ள பத்தி காமிச்சிருந்தாங்க சார். புரியல ஒரு கிள்ள பத்தி காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க சார். என்ன காமிச்சிருந்தாங்க? அவர் வந்து அந்த சீக்கிரட் வந்து படிச்சாங்க. ஒண்ணுமே குரல் கேட்கல. எக்கச்சக்கமா சத்தம் அக்கம் பக்கத்துல பின்னாடி சத்தமா இருக்கு. ஒண்ணுமே கேட்க முடியல. டிராவல் பண்ணிட்டு சரி, என்ன பார்த்த? என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சது? நம்ம எப்படி நம்ம வந்து
பாஸ்ட் சொல்லதான் நடந்துட்டாங்க. பாசிட்டிவ் பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா அது வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க சார். நெகட்டிவ் அது மாதிரி எதுவுமே சொல்ல, நீயே சொல்ற. பொறுமையா நீ கேளுமா. ஏன்னா உனக்கு ஹெட்போன் இருக்குல்ல, ஹெட்போன்ல கிளியரா கேளு. நம்ம வெறும் பஜன் மட்டும் பாடல. we are here to learn. அவங்க என்ன சொன்னாங்க? can some elder say what did we see? can somebody share his or her thoughts? Yes. कोई बोलेगा? May I say? Yeah, please, very good, madam. Please say, open your video. What did you learn? What did I learn? What did we all learn? Nothing is permanent in this world. Katie Amma, Nidarshana? Definitely happiness will come. Very good, ma. இந்த படத்துல என்ன காமிச்சாங்க தெரியுமா? லைஃப்ல எதுவுமே பெர்மனண்டா இல்ல. எப்படி உன் பிரச்சனைகள் இருக்கோ அது தானா போற டைம்ல போயிடும். சந்தோஷம் இருக்குல்ல, அதுவும் போயிடும். சோ இன் திஸ் லைஃப், இந்த உலகத்துல எதுவுமே பெர்மனன்ட் இல்ல. புரியுதா? சோ அதாவது உனக்கு தோல்வி வருதுன்னா கவலைப்படாத, அழுவாத, ஓடிடாத, நில்லு, உன் வேலையை பாரு. ஸ்லோவா தோல்வி போயிடும், உனக்கு வெற்றி வரும். புரியுதாமா? அதே நேரத்துல வெற்றி வரும்போது அகங்காரத்தை போயிடாத, நான் தான் சாதிச்சிருக்கேன். ஏன்னா அது உனக்கு நிரந்தரமா நிக்காது. இந்த உலகத்துல ஒண்ணுதான் பெர்மனன்ட். there is only one thing that is permanent. அது என்ன பெர்மனன்ட்? change is only permanent. வேற எல்லாமே டெம்பரரி. மாற்றுதல் இருக்குல்ல, அதான் எப்பவுமே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் லைஃப்ல. மத்த எல்லாமே போயிடும். so change is only one thing that is permanent in our life. so when it comes to sorrow or when it comes to happiness, don't take it too personal, because everything has to go. now equate in the padathla paathola, what we saw in this, what did Lord Krishna sell in Bhagavad Gita? Bhagavad Gita la or paadam sollirkar. Enna sollirkar? Try to equate this. This is modern version of Bhagavad Gita. But what did originally Sri Krishna Paramatma அர்ஜுனருக்கு மகாபாரத் யுத்தத்துல சொன்னார்? அவர் என்ன சொன்னாரு? சொல்லு நிதர்ஷனா. வெரி குட், முயற்சி பண்ணு. என்ன சொன்னாரு? இப்ப படத்துல பார்த்த சுகமோ துக்கமோ, விக்டரி मेरे को वो आके वो मंत्र श्लोक पूरा तो नहीं कहना आएगा भगवत गीता में। सुख दुख के समय लाभो लाभो जय जय, एक ऐसा श्लोक आ रहा है, सुख दुख समय कितो लाभो लाभो जय, लाभो लाभो जय जय, सुख दुख हमेशा एक से नहीं रहेंगे, ऐसा ही कुछ बोला था। आप म्यूट पे हो। इतनी देर में म्यूट पे था क्या? हाँ। अरे इसीलिए रिया कोई नहीं कर रहा था क्या? गीता में श्लोक आ रहा है सुख दुख के ऊपर, मेरे को वो श्लोक पूरा नहीं आता है, बस लाइन आती है, सुख दुख के समय के तो लाभ हानि जय पराजय एक समान नहीं रहेंगे, एक श्लोक है, ऐसा आ रहा है कुछ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को श्लोक नहीं आता है, लेकिन सुधांशु जी महाराज के जुबान से मैं ये लफ्ज मेरे को बहुत याद है कि सुख और दुख में भी एक बैलेंस में करता है। दुखी में ना दुख करो, दुख में ना दुखी हो, सुख हुई में ना सुख हो,
बस एक ही आराम से बैलेंस में चलता है, जिसको सुख दुख कुछ नहीं लगता है, उसी को इंसान, वही एक मनोवृत्ति के साथ इंसान अगर जिए तो दुनिया में सही मायने से जी सकता है. You said श्लोक जिसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन the person who doesn't become happy in happiness, doesn't become sorrowful in sorrow, and maintains his balance. That's what Krishna Paramatma said. We should all try to live. Very good, Hitesh ji. At least आपने सोच के बदल के इंटरेक्शन होता है तो मजा होता आता है. आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हो, तो वेरी गुड. निदर्शना, केटी अम्मा, भगवद गीता कृष्ण என்ன சொன்னாரு? நம்ம லைஃப்ல கஷ்டமா சந்தோஷமா சந்தோஷமாவும் ஓகே. இப்போ நீ பாடுறியம்மா நிதர்ஷனா? பஜன் பாடுறியா? சார் நான் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு கிட்ட வந்துட்டேன் சார். நான் லாஸ்டா பாடுறேன் சார். நீங்க பாருங்க. இல்ல டைம் ஓவர்மா. 7:30 மணி ஆயிடுச்சு. இப்போ நீ நிகழ்ச்சி உட்கார்ந்து பாரு, கவனி. நான் சொல்றேன், உனக்கு எதுவுமே கவனிக்க மாட்டேன்ற நீ ரொம்ப விளையாட்டு புலியா இருக்க. உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற நாலேஜ் அக்யூமுலேட் பண்ணு, புரியுதா? பஜன் பாடலன்னு கூட வருத்தப்படாது, அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை பாடலாம். இப்போ நீ இருக்கிறது கேளு, டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடாத. Now the bhajan time is over. There is one very interesting discussion. If anybody wants to say something, you can please. Otherwise, I will share my idea. कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है. Anything connected to exchanging of thoughts whereby we benefit from each other's knowledge. I think nobody is raising a hand. Sudhanshuji Maharaj's philosophy of life. Who do so many things in life, not merely for themselves, but even for others. You see, the crow, when it has something to eat, it calls all its relations share. But as a human being, we tend to be very selfish. We don't want to share. We don't want to do something good for our fellow companions. So Guru Maharaj always says, you have no right to sleep in a day if you have not done any good action in a day. You should do at least one before you sleep. That one action in a day, you have no right, correct? That action can be very simple. It need not be, you have to only contribute money to somebody. It can be very simple. How? Keeping your body healthy by doing yoga, pranayama. Going to satsang and learning something and coming and sharing the knowledge with your friends. Giving water to the birds. Making somebody cross the road. Talking to nice, sweet words to your aged parents at home. Doing something for them. Something for yourself. So you have to register one good action for yourself or for the others. Because unless you don't do for yourself, you will not be able to do for others. Whenever there's something good happening on Zoom or physical, without any invitation, go and participate. Because when bad people have so much of unity, why not we good people also have unity in doing something good? I've got a small 3 minutes, very interesting video, which I played it on the June 4th, 2017.
my first class with the students at BAL Satsang in ARYA SAMAJ BAV. That's how I got my motivation to do it on my personal platform. This 3 minutes of video we will watch, excellent. But unfortunately, in this video, it is probably on a Thailand or a Malaysian citizen. It is not on an Indian citizen. I felt very ashamed. But then I realized, probably we in India, we Indians don't do that much of good to others. We are very selfish. That is probably the reason nobody has made this movie on us. They made it on their national citizens because they do good. So here, see this video. We'll have a small discussion after that, and then we will wind up today's BAL Bhajan. So just wait. Let me switch on this video.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีअच्छा लगा excellent no excellent वीडियो पे कोई कुछ बोलना चाहेगा anybody want to say anything about this video before we wind up
कोई कुछ बोलना चाहता है? One thing is very, very certain. To make this world a beautiful place, we don't have to do big, big, extraordinary things. No. We can do small, ordinary things in life which are full of love, kindness. Sometimes your love and kindness has to be harsh to make the other person understand. Sometimes your love and kindness has to have the affection of a mother. But do the best in life till we are alive, so that when we are dead and gone, there should be at least 4 people in this world, 4 people in this world who are not related to us by blood, but they should say that because of Bindya ji, because of Hitesh ji, because of Lakshmi Lochana ji, because of Nidarshana ji, everybody Sir ji, you are not there. I'm here. Can't you see me? No. Uncle ji is not there. You find him now. Uncle ji जो डिस्कनेक्ट किया हुआ था वहां तो आयो. sorry, again my line got disconnected. Yes. Yes, sorry. बस conclude कर रहे, थोड़ा ending आ गया. So living, everybody lives for their own self, but how many of us live for others? Now, I'm not saying we'll become social workers and leave our house and serve the society. No, first is our parents, our family, our neighborhood comes secondary, then afterwards the world at large. So only in request from me to my own self and to you all is that even an animal lives for his own self. We are human beings. Let us live a life which is worthy of being called a human life. So we will do a lot of actions in our life which we might not benefit from financially or any way, but believe me, we all would have experienced it. You, everybody, that gives you so much of satisfaction that today we did something nice for others. You look up to the sky and thank the God that you gave me an opportunity, that somebody was happy because of us. And that minute of satisfaction is tremendous. We all would have experienced it. Let us continue experiencing it. Okay? Nidarshana, ஒரு நாள்ல ஒரு செயல் மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கிற மாதிரி பண்ணோம். உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும், மத்தவங்க கூட தரணும். Right? Shall we pledge that what we are doing today, we'll continue doing it? At least one good act in a day. Okay? Yes? Thumbs up? Okay. Very good. So in the end, we will do one good act,
व्हाट इज दैट एक्ट हितेश जी? हम एंड में एक अच्छा कार्य करते हैं, क्या काम करते हैं? आनंदासन। वेरी गुड निदर्शना, न्यू மைக் தோற இத்தேஜு மைக் தோ ஓபன் பண்ணுவார், நானும் மைக் ஓபன் பண்ணிட்டேன். Lakshmi Lochana ji, you also open your mic, and if you are interested, and if what if you're interested, try to laugh loudly. कीजिए, आप शुरू कीजिए आनंदासन. ठीक है, 1 2 3. When you laugh, your whole body should shake. It starts artificial and then becomes natural. शुरुआत में आर्टिफिशियल होता है, फिर आइंदे आइंदे नेचुरल हो जाता है. और इंसान सबसे खूबसूरत तब लगता है जब वो हंसता है. मालिक से प्रार्थना करेंगे हम सब मरते दम तक खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और सुखी रहें और हंसते रहें. ये संडे हवन नहीं था, ये संडे हवन नहीं था क्या? हवन ये संडे को क्या है कि एक और जगह पे चला गया था, इसीलिए मैं नहीं किया. जब भी आपको करूंगा मैं आपको पर्सनल और ग्रुप में करूंगा जूम पे, तब आज आ सकते हो. ठीक है? इस इतवार को भी शायद नहीं होगा क्योंकि तेवराम दरबार की पिक्चर दिखा रहे हैं ना, पता है आपको? जी हम पता है. आ रहे हो नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहा हूं. अरे ठीक है ओके, कोशिश करो जी. इंडिया जी ते अचो पिया ना पिक्चर ते नातवानी देवराम दरबार जी, देवराम साईं जी पिक्चर है. हाँ, शी शेकिंग हेड. अच्छा जी वेरी गुड. हाँ जरूर पहले मालिक जी मेहरबानी से पहले फैमिली सा गड अवल केयर गर्जंदा सी सभी. ओके, सबको धन्यवाद. शुभ रात्रि. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.